नंबर नहीं है मारना ना है ना रे गुड मॉर्निंग तो क्या हेलो भेज लो ना उसकी नहीं आ पा रहा रिकॉर्डिंग कर दिया रिकॉर्डिंग लिखा ना विजेता को भी बोलो ज्वाइन वैसे करना पड़ता गया आगे चैट वन आया है मैसेज इसलिए बंद दिखा इसमें गुड मॉर्निंग आ गया विधि पानी नहीं पी है पिया सही Are you guys audible to me? Hello. कर ली Am I So audible? request everyone please mute your voice. Okay. हमारी प्रणाम वैसे बात जाएगा मेरी आवाज नहीं जाएगी जाएगी। हाँ देखो अब जा रही है आवाज देखो हम तो भाइये गली में आई के धीरे-धीरे ना देखो ओके ना कभी ऊपर से प्रोफाइल में आवाज भाई प्रणाम
देख लेना डी ज्यादा के उपाय कर गया ठीक अच्छा वो आए कि ना आए बाकी It's a request. Everyone, please unmute. ठीक है क्या वो आए का हमरा कंफर्म कर वो उपाय ले ले Everyone, please listen. It's a request. Please unmute. है ना बा Hello and welcome. Good morning, everyone, to GreenJustice Network Foundation webinar today. I am Shriya Bajaj, Research Head, GreenJustice Network Foundation. I warmly welcome you all for today's webinar. I'll be moderating the whole webinar today. I welcome all the viewers to the webinar. At the end, we will also have a fruitful discussion. So if you have any queries or question, do send in the chat box. So before starting with the talk, I'll brief you about GreenJustice Network Foundation. GreenJustice Network Foundation, Advocacy for Earth, is a non-profit organization dedicated to the advocacy of the earth through awareness, action, and networking with young minds, and to find the solutions relating to environmental issues and create a new pattern of behavior of individuals and society as a whole towards protecting the environment, finally to make a positive contribution to the conservation of nature, natural resources, including wildlife, and stimulate community and private conservation efforts. It's a request, everyone please mute. There is a scrambling of voices here. Please mute. SKMD Hafizur, please mute. Everyone please mute. Dr. Priyanka, please mute.
Okay, thank you. So, Dr. Umesh, you two please mute. Everyone, please mute. Thank you. So today on World Environment Day, 5th of June, we have conducted a webinar on the broad theme, COVID-19 and its impact on environment. So without further ado, I would like to introduce to our 4 resource persons today who are great personalities working for the environment. And I'm really sorry to tell you that our 5th resource person is not here due to his personal reasons and so with this, I would like to invite our first resource person, Mr. Deepak Kumar, Environmental Officer, United Nations Development Program. He'll be speaking on environmental economics analysis during COVID-19 times. So I welcome you, sir. Deepak, sir, are you there? सर का माइक म्यूट है. Deepak, sir, please unmute your mic Okay. and continue. Are you guys audible to me? Yes, sir. Hearing me? Yes, sir, you are audible. Yeah. Yeah. So can I proceed? Yes, sir. Sure. Hello. Yes, sir, you can proceed. Okay. So will you go for first introduction to all the members and then start the first thing, or I will speak on whatever I have to speak? Yes, sir, you can speak about the environmental economics analysis during COVID-19 times, and then we will invite the other resource persons. Thank you, sir. Okay. So hello to everyone. This is time we are fighting with the COVID-19, and whatever the disappointments you are witnessing from all the sections, whether it's social, political, or economic, all the bases we are talking on the reverse migration and other issues we are going through. But whatever the positive news is coming from the environment sector, that it's a temporary phase. It's not, we can say it's a permanent phase. It's a temporary phase, but for a temporary period of time, the earth is showing some positive changes, some positive and dynamic changes, that the air quality index is coming down. They are showing a healthy environmental trends as far as the air contamination is concerned. River is showing some upgradation of the water quality, and even witnessing post news from the biodiversity. So is this a temporary phase? And worldwide, as far as the policy is concerned, this year we have to witness this climate event is binding.
decade on biodiversity is coming to an end from 2011 to 2020 this year. And they will go further with 221 to 230 to 2030, the universal decade on biodiversity. So, as a whole, that we are witnessing a global trend around 5 to 10% carbon dioxide reduction this year. And particularly, what is a new ecological order? We are thinking of a new ecological order after this COVID-19. What would be the new ecological order? It's not the new that valuation of ecosystem is very important. What we are taking the ecosystem services and benefits, prioritizing from the ecosystem that we are now valuing. Even government policies and environmental governance doesn't value this valuation. But we need to work on this. We need to work on this aspect. We are a model of the United Nations Environment Program in 2008, the economics of ecosystem and biodiversity, team model. And in 2013-14, we have association with Team India initiative with the government of India. And they have started working on 12 to 14 ecosystems. Some wetland, very pertinent wetland ecosystem in this country to evaluate the economics based on their different services, whether it is procuring services, whether it is regulating services, whether it is supporting services, or whether it's cultural services. So some of our very important information is coming out when we are working on. Likewise, they have worked on the deep analysis of Chilka Lake, Chilka wetland. Particularly, wetland is very important part of the ecosystem. When we are talking of the wetland conservation in India, we have lost around 60% to 65% wetlands in the last 50, 60 years. And these wetlands are specifically very important for the marginalized communities. And in days when there is an ecosystem marginalization happening everywhere, and that ecosystem marginalization is pushing poor people more marginalized, that the class difference is increasing because of this natural ecosystem marginalization. And this post-COVID phase, we have to think, we have to rethink about, we have to reinvent our trust in nature. And how will you reinvent this trust? To value the ecosystem. Valuation doesn't get misconstrued that we are going to pricing of the ecosystem. We are not pricing the ecosystem. We are just not putting a price on ecosystem or putting a price on nature. We are just trying to value the ecosystem services and benefits what we are accessing from them. So when we are going through estimation of the Chilka Lake, then for a formal information, I can share you that Chilka has in hidden economics, the monetary value of Chilka is around 10 times more than the state annual budget. You can just estimate this, that only Chilka wetland has such an enormous amount of monetary expenditure, monetary values inside the Chilka wetland as far as their livelihoods and ecosystem service and benefits are concerned. The value is 10 times more than the state budget. And look out how many wetlands in India. This is around 120-25 in national environmental list. What their demarcator, otherwise the state have already thousands of demarcation of the wetlands. In particular, state-wise, you can witness. But now around 37 Ramsar designated wetlands. But we are working on prioritizing basis on the Ramsar designated wetland. Recently, we have submitted a paper in Hamburg University, Germany, with one of my friends in Assam, Rana Chaudhary, and one is Mr. Ashok. That we have started estimating the monetary value of Soneville, one of a wetland, very important.
wetlands in Karimganj district of Assam. Then in a very limited resources, because we have a very we are doing valuation in India, because this is very in a very childish state, valuing the ecosystem and estimating the monetary economics of wetland. Then we are trying to estimate the economic value of solar mill. Then it's around minimum of the $88 to around $29,596. This is per hectare. They have got the estimate, and this wetland is around 4,000, above 4,000 hectares. So what we are trying to do is that we should value our ecosystem. Valuation is quite very important part when we are talking about. Why? Because we are getting ecosystem services and benefits from the nature around 95 to 99% free of cost. And what we are giving in return? We are giving in return the government's blindfolded around that are very destructive, encroaching our important wetlands, encroaching our mangrove, encroaching our forests, deforestations everywhere, mountain mining, sand mining. These are very destructive processes are going on. So it's very important that more than time in the post-COVID time, we should work on valuation of economic, valuation of ecosystem, and we need to tell the people that ultimate healthy ecosystem will Deepak sir, we are not able to hear you. Sir, unmute. Hello. So now we're able to hear. Yes, sir. Yes, sir. Now it's clear. Yeah. So what I'm talking about that in current days, when we are fighting with such pandemic, and this is very not uncertain, that why we are going through this corona or COVID-19, because in 2005, when Intergovernmental Panel Climate Change in its climate assessment report, Work Group 3, has already disclosed this, that if this rising temperature will go on and on, if the heating of the earth will go on and on, then there is an additional push to the melting in the glaciers and the polar ecosystem. And those viruses, those microorganisms, those are preserved in the those polar ecosystem will flow into the ocean, and that get turned to an additional part of the food chain system. So it's not very new. So what we do is to valuing our ecosystem is very important those days when we are talking about healthy ecosystem, because healthy ecosystem will make you to survive longer. Healthy ecosystem will make you to provide resilience against these diseases, microorganisms-based diseases, or disaster or other environmental risk. It's very clear. So what we need to do is to start from the beginning, to link back your child at your home, to connect with them, connect them with the nature, to continue make an assessment as a parent, whether the school is providing a correct environmental studies or not, that the school is not connecting your child with the environment, then try to push the administration to work on the process, to connect those guys, connect those little brain with the nature. So what we are in the most when we on wider economics prospect, then ecosystem and benefits must be given priority, and we people should work on a wise use of utilizing our ecosystem. So my core message is to maintain your ecosystem healthier,
because ecosystem marginalization will turn into a disaster for the poor people, because poor people are more dependent on the livelihoods and for their life on natural ecosystem. So ecosystem marginalization in whatever way is disaster for the poor people. So stop this ecosystem marginalization and get whatever the wetlands are alive and whatever the other ecosystems are alive. This should go on and on. Like the Bihar government has posed two very important aspects, Jal Jeevan Haryali and making a people biodiversity register on the ground. They have a biodiversity management committee has formed in the panchayat level, and from that ground level they are working on to collect people biodiversity register. This is very important and pertinent part, because when there is a biodiversity, there is our existence. And another one is our 25 crore budget fiscal allocation for Jal Jeevan Haryali. These two policies are very pathfinder for such important aspect of life and livelihoods when we are fighting with the corona and with this pandemic. At this time, we need such policy measures. We need to understand that governments should go with providing people the basic amenities of healthier and livelihood to our best planet. Livable planet is needed. Healthier ecosystem is needed. Thank you all. Go ahead if you have any questions. Thank you so much, sir. They were very valuable takeaways. It was true that a healthy ecosystem will make you survive longer, and we'll have to maintain our ecosystem more healthy. And the things working at the panchayat level about the biodiversity management, which you talked about, was really a helpful thing, which we all knew. So moving forward, I'd like to now call Dr. Rana Navneet Roy, Assistant Professor Environmental Law, HNLU, Raipur. So he will enlighten us on eco-centric and anthropocene approach and its legal aspects in COVID-19 times. So Rana sir, I welcome you. Rana sir, are you there? Hello. Yes, sir, we can hear you. Shriya? Yes, sir. Okay. Thank you, Shriya, for giving me opportunity to speak something on the very relevant issues. First of all, let me say good afternoon to one and all. And since today is World Environment Day, so let me wish a happy World Environment Day. We will initiate the discussion from the background of this World Environment Day itself. But let me tell one thing, as I have been told by the organizer that most of the participants want me to speak in Hindi so that I could reach to the maximum number of participants and I can interact nicely. So on this request and in this background, I switch over to Hindi, but I will be using both the languages simultaneously in order to make my thought better and understandable to all. So फ्रेंड्स आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चूंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट करने की शुरुआत 1972 में सोचा गया था, जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा था यूनाइटेड नेशंस द्वारा। तो उसी में ये डिसीजन हुआ था, चूंकि 5 जून को ही इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन हुआ था और उसमें डिसीजन लिया गया था कि 5 जून को ही नेक्स्ट ईयर से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाएगा। हालांकि 1973 से इसकी शुरुआत नहीं हो पाई, इसकी शुरुआत 1974 से हुई और उस समय का थीम था ओनली अर्थ। सो इसका शुरुआत ही इतना पॉजिटिव था, इतना अच्छा था कि ये सोचा गया था कि चूंकि प्लेनेट तो कई है लेकिन अर्थ एक है जिस पर लाइफ संभव है। सो ये मैसेज देने का प्रयास किया गया था कि वी हैव टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ अर्थ इन सच ए वे that it should not exhaust and we should use this resources sustainably so that it could we could leave something for the
next generation. But opposite of that theme, we were exhausting and we were exploiting the natural resources in such a way that after utilizing or after exhausting all the resources of Earth, we could shift to another planet. मतलब इस तरह हम लोग अर्थ के रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, दोहन कर रहे थे भी और हैं भी, कि इसको पूरा यूज करके हम दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट कर जाएंगे। हालांकि अभी तक सारा रिसर्च फेल है कि दूसरे ग्रह पर, दूसरे प्लेनेट पर, मंगल पर या कहीं और लाइफ संभव है क्या। तो रिसर्च ये कहता है कि नहीं है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट थीम से इसकी शुरुआत की गई थी। इवन आज का जो थीम है, आज जो हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मना रहे हैं आज 2020 में, तो आज का भी जो थीम है सेलिब्रेट द बायोडाइवर्सिटी, मीन्स व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ऑर्गेनिजम्स। नेचर एंड, एक तरफ नेचर, दूसरी तरफ पूरा ऑर्गेनिज्म। सो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन है बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, आप कहना ठीक नहीं है आज के दौर में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अब एंथ्रोपोसेंट्रिक से इकोसेंट्रिक अप्रोच की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो पूरा ऑर्गेनिज्म को एक तरफ ले लीजिए, लाइफ को एक तरफ ले लीजिए, पूरा बायोस्फीयर को लीजिए, और दूसरी तरफ नेचर, और उसके बीच का जो एक सिम्बायोटिक रिलेशन है उसको कैसे हम प्रिजर्व करें। और इसको करने के लिए हम कहीं ना कहीं जैव विविधता को संरक्षित करेंगे, और बिना बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किए हुए ये संभव नहीं है। तो ये एक बैकग्राउंड था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जो टॉपिक मुझे कहा गया है, सजेस्ट किया गया था कि आप इस टॉपिक को टच करिए आज, और आज की आवश्यकता वही है कि हाउ वी वुड बी शिफ्टिंग फ्रॉम एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच to eco-centric approach for tackling the various environmental challenges not only in India but throughout the world. तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच क्या है और इकोसेंट्रिक अप्रोच क्या है। एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच में हम जब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं पूरा ह्यूमन सेंटर्ड होता है। उसको कहा जा सकता है कि प्योर ह्यूमन सेंट्रिक होता है। वो प्योर ह्यूमन सेंट्रिक में जहां हमारा पूरा फोकस ही ह्यूमन बीइंग हो। तो जब हम इसके लिए अपने प्रेजेंटेशन के बाद में हम चर्चा करेंगे 2-3 मिनट, इंडियन जो एंशिएंट अप्रोच था जो कि एंथ्रोपोसेंट्रिक ही था, उस पर चर्चा करेंगे। बट आज हम एक वर्ल्ड को यूनिवर्सल के तरह देख रहे हैं कि कैसे इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करते आए हैं। तो इसकी स्टोरी शुरू होती है 1972 के कॉन्फ्रेंस से। हालांकि उसके पहले भी कुछ घटनाएं थी, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज था, कुछ घटनाएं थी जो कहीं ना कहीं ये यूनाइटेड नेशंस के पार्ट पर और वर्ल्ड लीडर के पार्ट पर एक ये सोचने को विवश किया कि आज हमें कहीं ना कहीं से इन्वायरमेंट अवेयरनेस के बारे में भी सोचना है। मींस वी हैव टू टेक अल्टीमेट कॉल whatever changes, whatever problems we are facing towards environment. तो चूंकि हम जानते हैं कि 1945 में यूनाइटेड नेशंस आ गया था, यूनाइटेड नेशंस चार्टर आ गया था, 1948 में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आ गया था। तो हम एक मींस कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की तरफ बढ़ रहे थे। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये सब फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये सब आ रहा है। तो उस बैकग्राउंड में जब हम सोचेंगे, इन सारे बैकग्राउंड में इन्वायरमेंट पर क्या काम हो रहा था, इन्वायरमेंट पर हमारे पास क्या था, तो स्थिति बड़ी निराशाजनक थी। किसी भी देश के का जो सुप्रीम लॉ होता है, जिसको उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन या कुछ और नाम से हम जान सकते हैं, उसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर कोई चर्चा नहीं थी। अपना संविधान भी हम जानते हैं कि 1949 26 नवंबर को आया, इसलिए हम लोग 26 नवंबर को लॉ डे मनाते हैं। फाइनली 26 जनवरी को हम गणतंत्र हुए, रिपब्लिक हुए, और उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूर्ण तरीके से लागू हो गया। लेकिन जब हम अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, उसमें डायरेक्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ कोई प्रोविजन नहीं मिलता है। ये सब इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये पूरी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो हुआ, इसकी पूरी स्टोरी शुरू होती है 1972 से, जब यूनाइटेड नेशंस ये डिसीजन लेता है कि हमें एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करना है जिसका बेसिक ऑब्जेक्ट होगा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। तो 1972 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो जैसा कि नोमेनक्लेचर से ही बहुत क्लियर हो रहा है कि ये मेन फोकस इस कॉन्फ्रेंस का था ह्यूमन बीइंग।
इट मीन्स ये कॉन्फ्रेंस ह्यूमन सेंट्रिक। इसी कॉन्फ्रेंस में 7 ट्रूथ है, जहां बताया गया है कि मैन इज द मोल्डर ऑफ देयर इन्वायरमेंट विच इज वेरी मच नेसेसरी फॉर देयर कल्चरल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड अदर काइंड्स ऑफ ग्रोथ। उसी में हम स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को भी अडॉप्ट किए। इस डिक्लेरेशन को भी जब हम एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि पूरा इसका जो आउटकम है वो ह्यूमन सेंट्रिक है। तो 1972 का जो कॉन्फ्रेंस ह्यूमन सेंट्रिक जरूर है, फिर भी ये मील का पत्थर साबित हुआ। मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको, मैग्ना कार्टा इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट, चूंकि ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की दिशा में पहला कदम था। इसके बाद बहुत सारा अवेयरनेस आया, बहुत सारे कंट्रीज इसमें भाग लिए। हालांकि ये स्टेट लेवल पर था, इसलिए उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ जितना रियो कॉन्फ्रेंस हुआ। इसलिए रियो कॉन्फ्रेंस को अर्थ समिट कहा गया है, क्योंकि उसमें स्टेट मींस कंट्रीज हेड रिप्रेजेंटेटिव के अलावे बहुत सारे एनजीओज, शैक्षणिक संस्थान, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, मीडिया पर्सन्स, पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, सारे लोग एकत्रित हुए थे और एक तरह से सारे कंट्रीज थे उसमें। अबाउट 190-175 कंट्रीज उसमें थे, इसलिए इसको अर्थ समिट कहा गया। तो हम वहां आएंगे। हम बात कर रहे हैं कि 1972 का जो अपना कॉन्फ्रेंस था वो ह्यूमन सेंट्रिक था, इसलिए इसको एंथ्रोपोसेंट्रिक कहते हैं। 1972 कॉन्फ्रेंस में ही ये डिसीजन हो गया था कि एक इन्वायरमेंट स्पेसिफिक बॉडी यूनाइटेड नेशंस के स्तर पर काम करेगी, उसका एस्टेब्लिशमेंट होगा। और उसी साल हम यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनेप का इस्टेब्लिशमेंट हो गया, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के दिशा में इंटरनेशनल लेवल पर काम करती रही। और उसी का तत्वाधान में बाद में ब्रंटलैंड कमीशन बना, रियो डिक्लेरेशन, रियो कॉन्फ्रेंस हुआ, रियो डिक्लेरेशन आया, प्लस बहुत सारा कॉन्फ्रेंस होता आ रहा है। उसके अलावा 1983 में ब्रंटलैंड कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ, जो कि 1987 में अपना रिपोर्ट लाया। इस रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जानते हैं। ये रिपोर्ट पब्लिश भी हुआ, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस भी पब्लिश की थी, और द बुक का भी नाम आवर कॉमन फ्यूचर था। इसका मतलब है कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का ध्येय है, जो ऑब्जेक्ट है, ये किसी एक का काम नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, किसी एक कंट्री का नहीं है, किसी एक ग्रुप का नहीं है, किसी एक सेक्शन का नहीं है। ये हम सारे लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्ट है, और हम लोग का सारा फ्यूचर कॉमन हो जाता है इस बात को आके कि हम कैसे इन्वायरमेंट को टैकल करते हैं। इसलिए बड़े नाइस ढंग से इसको, बड़े अच्छे ढंग से इसका नाम आवर कॉमन फ्यूचर रखा गया था। फिर इस बीच में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस और यूनाइटेड नेशंस के इंटरफेरेंस के बाद आईपीसीसी का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि अपना असेसमेंट रिपोर्ट देता आया है। ये बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपर्ट का एक बॉडी है, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला था जब आर.के. पचौरी इसके हेड थे, तो नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इस संस्था को। ये भी अपना काम क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रही है। और 1992 में हम आते हैं, जब रियो कॉन्फ्रेंस हुआ। तो रियो कॉन्फ्रेंस आते आते ये मानव समाज को प्लस वर्ल्ड कम्युनिटी को ये एहसास हो गया था कि सिर्फ ह्यूमन सेंट्रिक रहने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा हमको एक स्टेप फर्दर बढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ ह्यूमन, we will be improving and protecting environment for human purpose, then it would not be sufficient and it is not going to serve our ultimate goal. क्योंकि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का पूरा फ्रेज ही था एक लाइन में कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। इसका मतलब होता है कि ये दो चीज कन्फेस कर रहा है, दो चीज एडमिट कर रहा है। एक कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक बहुत हद तक हो चुका है, तब हमको नीड है इसको प्रोटेक्ट करने का, मींस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फर्दर डिग्रेडेशन, मींस और ज्यादा डिग्रेड ना हो, इसलिए इसको रोका जाए। दैट्स व्हाई द टर्म प्रोटेक्ट हैज बीन यूज्ड, टू प्रोटेक्ट और डिफेंड। कहीं कहीं आपको डिफेंड मिलेगा, कहीं कहीं प्रोटेक्ट मिलेगा, बट आपको मेन टेक्स्ट में प्रोटेक्ट मिलेगा। तो प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बहुत हद तक ये पॉल्यूट हो चुका है। एंड टू इम्प्रूव मीन्स प्रोटेक्शन से ही काम नहीं चलेगा कि आप प्रोटेक्ट कर दिए, जहां पॉल्यूशन जिस हद तक हुआ है उसी हद तक आगे ना हो। तो उससे आगे बढ़ के हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे इसका क्वालिटी इंप्रूव हो। जैसे हम उसमें डिसइंफेक्टेंट मिलाए और पेड़ पौधा लगाए रिवर के आसपास, पॉपुलेशन कंट्रोल करे। बहुत सारा मेजर है, चाहे वो मिटिगेटिव मेजर्स हो या अडेप्टेशन से रिलेटेड हो या मिटिगेशन से रिलेटेड हो। बहुत सारा चीज करना पड़ेगा ताकि इसका क्वालिटी इंप्रूव हो। तो इस तरह से हमको इन्वायरमेंट को बचाना है। फॉर व्हाट? फॉर ह्यूमन बीइंग। तो ये कहीं ना कहीं से इतना ह्यूमन सेंट्रिक हो रहा था, कहीं ना कहीं से ह्यूमन सेल्फिशनेस की बात आती थी। तो जब ब्रंटलैंड कमीशन का रिपोर्ट आ गया, ब्रंटलैंड के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि 1983 में लेडी ग्रो हार्लेम
ब्रंटलैंड, जो कि नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर थी, क्योंकि वो पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन थी, हेल्थ एक्सपर्ट थी, तो उनके चेयरपर्सनशिप में ये कमीशन बनाया गया था और इसका रिपोर्ट 1987 में आया और ये रिपोर्ट फर्दर इन्वायरमेंटल गाइडेंस के क्षेत्र में बहुत काम आया। तो ये 1992 का रियो कॉन्फ्रेंस जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे उस समय भी ये गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह था। तो इसका एक असर था कि हम लोग जब रियो कॉन्फ्रेंस आयोजित किए तो ये ह्यूमन इन्वायरमेंट पर नहीं किए, ये किए हम लोग वर्ल्ड द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कारण क्या था कि ब्रंटलैंड कमीशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म परिभाषित कर दिया गया था। हालांकि कहीं ना कहीं से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ओरिजिनेट करता है, बट क्लियर कट ये टर्म यूज नहीं हुआ था स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में, बट इसका बीजारोपण हो गया था। मींस वी कैन से कि द रूट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज रूटेड इन स्टॉकहोम डिक्लेरेशन इटसेल्फ, but this very much concept in crystal clear way has come through Brundtland Commission's report. So इसी के कारण हम रियो कॉन्फ्रेंस जब मनाए तो उसका नाम रखे ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इट मींस आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जब डेफिनेशन देखेंगे जो ब्रंटलैंड कमीशंस में है कि द डेवलपमेंट दैट फुलफिल्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इट मींस फिर भी ह्यूमन सेंट्रिक ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डेवलपमेंट को छू रहा है और इसका दायरा बढ़ रहा है, माने ह्यूमन सेंट्रिक से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो हम जब यहाँ आते हैं 1992 में इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, तब हम लोग को ये लगता है कि ये सिर्फ ह्यूमन पर केंद्रित ना होके पूरा पूरी कहीं ना कहीं हम और भी ऑर्गेनिज्म को जितना भी बायोस्फीयर में है उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन वैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा या वैसे वाइल्ड प्लांट या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वाइल्ड एनिमल या वाइल्ड प्लांट, हम वी कैन से वाइल्ड लाइफ, जो एक इंस्ट्रूमेंटल का काम करेगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस अभी भी हम कहीं ना कहीं से एंथ्रोपोसेंट्रिक पर ही चिपके हुए हैं और कहीं ना कहीं से ह्यूमन सेल्फिशनेस आ रहा है कि हम वैसे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे जो ह्यूमन के विकास के लिए इंस्ट्रूमेंटल रहेगा। तो ये 1992 का था। हालांकि जब हम इसके एजेंडा 21 को देखते हैं या इसी में दो और स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट किया गया था, एक UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस क्लाइमेट चेंज के लिए इंस्ट्रूमेंट था, और दूसरा बायोडायवर्सिटी के लिए था CBD कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी। क्लाइमेट चेंज वाले को UNFCCC कहते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और बायोडायवर्सिटी वाले को हम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी शॉर्ट में CBD कहते हैं। तो जब हम एजेंडा 21 को देखते हैं और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी को देखते हैं तो पाते हैं कि ये दोनों डॉक्यूमेंट का जो आउटकम है थोड़ा थोड़ा इकोसेंट्रिक टचिंग है। मैं यहाँ यह बता देना उचित समझता हूँ कि इकोसेंट्रिक अप्रोच में हम पूरे नेचर को केंद्रित रखते हैं, मींस ये नेचर फोकस्ड रहता है, नेचर सेंटर्ड है, और जब नेचर सेंटर्ड है तो हम सारे वाइल्ड लाइफ को यहाँ कवर कर लेते हैं। वैसे वाइल्ड लाइफ भी जो ह्यूमन के लिए इंस्ट्रूमेंटल नहीं है बट वो इंट्रिंसिक है, मींस वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ऑफ नेचर है, मींस ऐसा जीव जो ह्यूमन के लिए इंस्ट्रूमेंटल ना भी हो फिर भी हम उसको बचाएंगे, और उसको बचाने की बात इनडायरेक्टली रूप से हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी करता है 1972 वाला, प्लस और भी एक्ट है हमारे पास, और भी रीजंस है जिसमें हम कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे ये टचिंग है। अब हम थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट केसेस पर भी आएंगे, कुछ और डिक्लेरेशन पर भी आएंगे, बट उससे पहले 1 मिनट में यहाँ हम ये कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह आज इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और ये इकोसेंट्रिक अप्रोच का होना पोस्ट कोविड-19 के टाइम में भी जरूरी है, और कोविड-19 से इसका क्या रिलेशन है। आजकल बहुत सारा वेबिनार हो रहा है जिसमें कहीं ना कहीं हम सुनने को मिलता है ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, डिग्रेडेशन है, उसी के कारण कोरोना आया। तो अभी तक कोई रिसर्च क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है कि कोरोना इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण आया, बट हमको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जिस तरह से तरह तरह की अफवाह है कि एनिमल्स के खाने से, चमगादड़ के खाने से आया, तो हमको देखना पड़ेगा कि हम कितने क्रूएल एनिमल्स के प्रति हैं और उस तरह का क्रूएल्टी कैसे खत्म होगा। प्लस सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जब हम इन्वायरमेंट को कोविड-19 से जोड़ के कुछ बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो कंक्लूजन, सबसे बड़ा निचोड़ और सबसे बड़ा मैसेज हम कह सकते हैं कि ये जो कोविड-19 पेंडेमिक सिनेरियो या सिचुएशन हमको दे रहा है या
पोस्ट कोविड टाइम भी हमको देगा या दे रहा है वो ये है कि ये जो कोविड सिनेरियो है ये हमको बड़ा क्लियर बता दिया है कि मैन इज नॉट क्राउन ऑफ द क्रिएशन, मैन इज नॉट शहंशाह, जैसे मानव सब कुछ नहीं है। हम नेचर को धता बताते चले आ रहे थे, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बल पर बहुत ज्यादा कूद रहे थे, हम टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट के कारण कहीं ना कहीं हरित क्रांति है, बहुत सारा चीज है, उस के कारण हम अपना जमीन को बंजर बनाते चले आ रहे हैं, एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते जा रहे हैं, और ये एक होप पर कि साइंस सबका सॉल्यूशन ढूंढ के हमको दे देगा। हालांकि साइंस पर निर्भरता इतना ज्यादा बहुत घातक है, और वही एक मैसेज हमको ये पोस्ट COVID-19 सिनेरियो बता रहा है कि मैन यू आर नॉट क्राउन ऑफ द क्रिएशन, मींस नेचर इज एवरीथिंग, नेचर हैज एवरी राइट टू टीच यू ए लेसन, एंड if we will not care, we will not respect for the nature, it is nature which is having ultimate authority, which is having ultimate power, which can do anything. It has brought only corona and COVID-19, it can bring even extinction to the human being. In the past we have already seen that so many species have been extincted, and man is not exception of anything. जब बहुत सारा जीव, डायनासोर था, वल्चर्स था, बहुत सारा है, means we can say it is a kind of unlimited species. Means right now there is no very clear data कि how many kinds of insects, bacteria, microorganisms, plants, wildlife, wild animals, other species have been extincted by the human interference, means by the anthro-centric approach of the human being. ये डेटा बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जब बहुत सारा स्पेसीज एक्सटिंक्ट हुआ तो व्हाई नॉट ह्यूमन बीइंग। सो एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा एक सीख है जो मानव को लेना चाहिए कि कोविड-19 एक जो मैसेज सिखलाया है कि हमको नेचर को रेस्पेक्ट करना है, तो उस नेचर का रेस्पेक्ट हम लोग को शुरू करना पड़ेगा, और बिना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के इन्वायरमेंट का भला नहीं हो सकता है। जब इन्वायरमेंट का भला नहीं होगा तो किसी भी वाइल्ड लाइफ हो, वाइल्ड एनिमल या वाइल्ड प्लांट्स हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसका भला नहीं होगा। और हम लोग का एग्जिस्टेंस तभी तक है जब तक इस संसार में, जब तक इस पृथ्वी पर अन्य जीव भी संरक्षित है। जिस दिन अन्य सारे जीव संरक्षित नहीं होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ह्यूमन का भी एक्सटिंक्शन बहुत हद तक संभव है। तो इस बैकग्राउंड में जब हम फिर आते हैं अपने इन्वायरमेंटल मूवमेंट, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा मॉडरेटर से कि जैसे ही टाइम हो मुझे 2-3 मिनट पहले बता देंगे, उसी के अनुसार मैं कंक्लूड कर लूंगा। लेकिन मैं फिलहाल कुछ मिनटों में जो इन्वायरमेंटल डिक्लेरेशंस है, इन्वायरमेंटल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर एकदम ब्रीफ में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि कैसे अपना इन्वायरमेंटल लॉ भी, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी एंथ्रोपोसेंट्रिक से होते हुए इकोसेंट्रिक अप्रोच की तरफ बढ़ रहा है। तो जब हम डिक्लेरेशन देखते हैं, चाहे वो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हो या 1972 में, या नैरोबी डिक्लेरेशन हो 1982 का, या 1992 का रियो डिक्लेरेशन हो, या 2002 का जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन हो, या फिर 2012 का रियो डिक्लेरेशन फिर से, क्योंकि 2012 का जो पीरियडिक कॉन्फ्रेंस था वो रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था। तो जब हम 1972 से लेकर 2012 तक का सारा डिक्लेरेशन देखते हैं तो ये सब एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच को लिए हुए है। फिर अगर हम जजमेंट लॉ पर आते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक लॉ कुछ था ही नहीं 1972 के पहले तक। 1972 में जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में देन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पार्टिसिपेट की, और पार्टिसिपेशन के बाद जब इंडिया में आई तो उस समय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की तैयारी चल रही थी। उसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में श्रीमती गांधी के विशेष प्रयास से प्लस लेजिस्लेचर के प्रयास से जब अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में भी जोड़े गए जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 48A जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटी जो पहले नहीं था, 42nd अमेंडमेंट में ही पहली बार आया, स्वर्ण सिंह सप्पू कमेटी का रिकमेंडेशन भी था। तो 51A के तहत फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया और उसमें सब क्लॉज जी में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज जोड़ी गई। ये सिर्फ राइट की बात नहीं होगी, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही नहीं होगा, बल्कि ये हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी भी होगा कि हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, इंप्रूव करें। ये पूरा फ्रेज जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाला था, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव, वही फ्रेज को हम आर्टिकल 15(1)(a)(g) में भी डाले, 48A में भी डाले। और हम लोगों में एक कंपैशन होना चाहिए फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स। ये एक एग्जांपल है किस तरह से हम इकोसेंट्रिसिज्म की ओर बढ़ रहे हैं।
तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में पहले प्रोविजन आया और इस प्रोविजन के कारण फिर जो इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन जो बनने की प्रक्रिया में ऑलरेडी था, जैसे वाटर एक्ट ऑलरेडी बनने की प्रक्रिया में था, लेकिन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस उसमें कैटलिस्ट का काम किया और इस तरह से 1974 में वाटर एक्ट आया, 1981 में एयर एक्ट आया, 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया। समय का अभाव है इसलिए हम बहुत डिटेल्स में सारे एक्ट में नहीं जा सकते हैं, बट स्पेसिफिक लेजिस्लेशन की शुरुआत जो ट्रायंगुलर लेजिस्लेशन कहा जाता है, ईपी वाटर एक्ट, एयर एक्ट और ईपी एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब 1972 के बाद ही आया। हालांकि वाटर एक्ट के बनने की शुरुआत 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से इवन पहले से भी शुरू हो चुकी थी, जिसमें बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट रिजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को अधिकृत करता है कि आप स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ बना दीजिए, और इस तरह से पार्लियामेंट इवन स्टेट सब्जेक्ट पर लॉ बना दी। तो हम इस तरह इस जो कानून है, लेजिस्लेशन है, उसमें भी कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच ही पाते हैं। फिर हम कुछ केसेज में आते हैं, जब केसेज सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रही थी उस समय ऐसा देखा गया है कि जो इन्वायरमेंटल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, उसमें फंडामेंटल राइट में तो कुछ डाला ही नहीं गया था, सिर्फ डीपीएसपी में भी डाला गया, फंडामेंटल ड्यूटी में डाला गया, प्लस कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर को स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर हो उस पर कानून बनाने का। जैसे फॉरेस्ट है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, ये सबको स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। तो फंडामेंटल राइट में कुछ डाला नहीं गया था, और एनफोर्सेबल फंडामेंटल राइट ही है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास समस्या ये थी कि बहुत सारा जो केसेज आ रहे थे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट द्वारा, चाहे वो एमसी मेहता हो या बहुत सारा एनजीओज था, जैसे काउंसिल ऑफ इन्वायरो लीगल एक्शन, रूरल लिटिगेशन इंटाइटलमेंट केंद्र, ये सब एनजीओ जो बहुत अच्छा काम कर रही थी इन्वायरमेंट के फील्ड में, और वो सब रिट जुरिडिक्शन में या पीआईएल के तहत सुप्रीम कोर्ट आ रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट डायनेमिक इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 का डायनेमिक इंटरप्रिटेशन करते हुए उसमें जो इन्वायरमेंटल राइट्स है, जैसे राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ये सबको आर्टिकल 21 में के तहत इंटरप्रेट करते हुए फंडामेंटल राइट में लाने का बहुत उत्तम, बहुत प्रशंसनीय और बहुत डेयरफुल काम करने का प्रयास किया। लेकिन जब जितना भी केस हम उस समय का देखते हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद 2012 के पहले तक का जितना भी केस है, चाहे सुभाष कुमार का केस हो या रूरल लिटिगेशन इंटाइटलमेंट केंद्र का केस हो या फिर इन्वायरो लीगल एक्शन केस है, गंगा टेनरीज का केस है, एमसी मेहता का पूरा एक सीरीज है, अभी भी वो जिंदा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका अपना एनजीओ भी है, वो ट्रेनिंग भी देती है। आज वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम है जिसमें बोल भी रहे हैं, तो उनका एक पूरा सीरीज है जिसमें बहुत सारा केसेस वो लाए, ओलियम गैस लीक केस है, टेनरीज केस है, बहुत सारा केसेस है। उस सारे केस में सुप्रीम कोर्ट का भी अप्रोच एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच ही था। लेकिन जब हम 2012, 13 और 14 में डिसाइड हुआ केस और उसके बाद के केस पर आते हैं, तब हम पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट करता है कि किस तरह से इकोसेंट्रिक अप्रोच को लिया जाए, और ऐसा हाँ सॉरी टू इंटरप्ट बट नो इशू, कितना टाइम है लगभग, और उसके अनुसार मैं कंक्लूड कर दूंगा। 2 minutes. Okay, no problem. So I will try to conclude in next 2-3 minutes because we are running short of time. So due to paucity of time, just let the crux to be delivered. तो जो 12, 13, 14 का जो केस है, उसमें कुछ एशियाटिक लायन का केस है, मींस कुछ रेयर स्पीसीज का केस है, जिसमें रेयर स्पीसीज को बचाने की बात सुप्रीम कोर्ट करता है। और एक केस है इसमें टीएन गोदावर्मन का केस, दूसरा है सेंटर ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ WWF इंडिया का केस, जिसमें एक में एशियाटिक वाइल्ड बफेलो को बचाने की बात है, दूसरे में रेड सैंडलवुड को बचाने की बात है, तीसरे में एशियाटिक वाइल्ड लायन बचाने की बात है। इस सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट इकोसेंट्रिक अप्रोच लेने की बात करता है। पहला 1-2 केस में इनडायरेक्टली, थर्ड जो सेंट्रल इन्वायरमेंटल लॉ का केस है प्लस WWF इंडिया का केस है, उसमें डायरेक्ट ये कहता है कि इकोसेंट्रिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा और बिना इकोसेंट्रिक अप्रोच अपनाए हुए काम नहीं चलेगा। प्लस फिर 2009-10 का जो जलीकट्टू इवेंट है, जलीकट्टू का, जिसमें तमिलनाडु में जलीकट्टू इवेंट को, बुल फाइटिंग वाले इवेंट को चालू रखा जाए, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा इमोशनल थे, और इस गेम को जिसमें हम मतलब वाइल्ड एनिमल्स के लड़ते हुए देख के मजा लेते हैं, उसे को चालू रखने के लिए एक लेजिस्लेशन लाई थी। का नाम था तमिलनाडु रेगुलेशन ऑफ जलीकट्टू एक्ट 2009। इस रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट ने वायलेटिव बताया। अपना यहाँ एक ऑलरेडी एक्ट था जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1982 है,
बस आर्टिकल 51A का वायलेटिव बताया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। तो इस तरह से जलीकट्टू का जो इंसिडेंट है जिसमें उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया, ये सारा इवेंट है जिसमें कोर्ट का क्लियर अप्रोच है कि हम इको सेंट्रिज्म की ओर जाएंगे और नेचर फोकस्ड करेंगे, नेचर सेंट्रिक करेंगे। बट हम लोग के द्वारा जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं से ये बताता है कि हम अभी भी इको सेंट्रिक के तरफ नहीं बढ़ पाए हैं। क्यों नहीं बढ़ पाए हैं? क्योंकि आज कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की घटना है जिसमें एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को मार दिया गया है। एक पाइन एप्पल में बॉम्ब लगा हुआ पाइन एप्पल खाने के लिए दिया जाता है और खाते समय वो ब्लास्ट करता है और इस तरह से वो हथनी मर जाती है। इस पर पूरा अभी ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है कि कैसे इस तरह की घटना भविष्य में नहीं हो और कैसे हम इस तरह की चीजों को दूर करें। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि सिर्फ लॉ बना के हम ये कहे कि हमारा लॉ इको सेंट्रिज्म है, काम नहीं चलेगा। या हम जो डिसीजन हमारे पास हो, जो डिसीजन ये कहता है कि हम इको सेंट्रिक अप्रोच को अपना लिए हैं, फिर भी काम नहीं चलेगा। आज हम जब देखेंगे एक शिफ्ट स्टॉकहोम से शुरू होता हुआ जो पेरिस एग्रीमेंट तक आया है, उसका सार यही है कि आज हम सारे इंडिविजुअल को आगे आना पड़ेगा और इसको एक इंडिविजुअल मूवमेंट बनाना पड़ेगा। और इंडिविजुअल मूवमेंट पोस्ट जो कोविड-19 है यही मैसेज भी दे रहा है कि डोंट लीव द थिंग्स ऑन द मर्सी ऑफ गॉड, एट द सेम टाइम डोंट लीव द थिंग ऑन द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही है जिसमें गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि वो चीज रुके। चाहे आप मॉब लिंचिंग का चीज देख लीजिए, बहुत सारा जुडिशरी का अभी कोविड में डिसीजन देख लीजिए कि हम इंटरफेयर गवर्नमेंट में नहीं करेंगे। तो हम कोर्ट पर न छोड़ सकते हैं, न गवर्नमेंट पर छोड़ सकते हैं, न भगवान भरोसे छोड़ सकते हैं। आज किसी न कहीं हम रोटी कपड़ा मकान से जूझते हुए भी हर इंडिविजुअल को एक मूवमेंट के रूप में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेना पड़ेगा। और क्लाइमेट चेंज जो शब्द है, जो कहीं ना कहीं से मिसनोमर है, ऐसा लगता है जैसे पॉजिटिव शब्द है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ये क्लाइमेट ब्रेकडाउन है। तो हम क्लाइमेट ब्रेकडाउन जैसे समस्या से कैसे बचें, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे पेस्टिसाइड्स यूज ना करें, लोकल को हम ज्यादा अपनाएं, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन करें, हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को अपनाएं जिसमें हम पेस्टिसाइड यूज ना करके ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं। हम बेनिफिशियल इंसेक्ट जिसको नेचुरल एनिमी कहा जाता है उसके तहत फसल को बचाते हैं। बहुत सारा बायो एजेंट है, बायो प्लांट है जिसके छिड़काव करके हम प्लांट को बचा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, उसको अपनाकर एक इंडिविजुअल मूवमेंट बना के हर इंडिविजुअल को, हर सोसाइटी को, हर सेक्शंस को, हर सप्रेस्ड क्लास को आज आगे आना पड़ेगा और उसको एक मूवमेंट बना के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ सोचना पड़ेगा। और हमको सोचना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा कि कैसे हम पोस्ट कोविड-19 में हम लड़ेंगे। क्योंकि हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्रू जो थ्योरी जब बनाए थे हॉब्स लॉक रूसो के समय में, जब हम पूर्णतः समर्पित कर दिए थे अपने को स्टेट के हवाले, आज कहीं ना कहीं वो ब्रेक होता हुआ प्रतीत हो रहा है। और आज ऐसा लगता है, देखिए लॉकडाउन खत्म हो गया, अनलॉक शुरू हो गया, अब सब कुछ हम लोग के हाथ में है कि हम अपने को कैसे बचाए, अपने पर्यावरण को कैसे बचाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा और एक बार पुनः वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के बधाइयां एवं शुभकामनाएं देते हुए ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह से ऐसे समय में जब इस विषय वस्तु पर एक वेबिनार का आयोजित करना बहुत रेलिवेंट था, इसका आयोजन किया गया और बहुत सारे अच्छे वक्ताओं को इसमें बुलाया गया। अभी कई सारे वक्ता हैं जो बहुत अच्छा से इस विषय पर डिफरेंट एंगल से अपना प्रकाश डालेंगे और आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू लिसन टू देम आल्सो। And one of out of all speakers, one speaker is the alumni of the BHU, which I know, Mr. Pintu Kumar. तो वो हमारे BHU में alumni भी रहे हैं, हम लोग साथ में एकेडमिक में और प्लस बहुत जगह ये करते थे, डिस्कस करते थे। तो उन लोगों को सुनने का भी आज एक अच्छा मौका है। तो मैं धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा और थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंट हियरिंग। थैंक यू। Thank you so much, Rana sir, for your informative talk. Now, without further delay, I would like to call Dr. Prashant Kumar, Associate Professor Environmental Science, Central University of South Bihar, Gaya. He'll be speaking on management of waste in COVID-19 times. So I welcome you, sir. Prashant, Thank sir. you. Yeah, thank you very much, Bajaj. This is a very good opportunity for me to have a connect with the audience on the occasion of World Environment Day. Few days back, Chandan
contacted me and asked me to deliver something on the occasion of World Environment Day. So I thought, what was his plan? So he said that it is related to COVID and environment. My area of research is wastewater treatment and solid waste management. So I thought to bring something which is very close to the day-to-day life to the audience, so that they can understand the meaning of the waste and how the waste shall be managed in order to avoid the infections. And during the COVID situation, what the government hospitals, what the hospitals, quarantine centers are doing, how they are managing the things, these all shall come forward, so that everybody can understand what is going on and what shall happen after COVID, post COVID, what shall happen. It is important. That's why I prepared myself to bring a presentation in front of you, so that you can understand a topic which is related to the medical waste. Because in our day-to-day life, the municipal solid waste, we all know about it, because these things are produced from our households. But the medical waste are the waste which is being produced from our hospitals, healthcare facilities. So this is just you can say a different kind of situation, that people feel that they will be going to the hospitals to get a cure, but at the same time, hospitals are also potential source of various types of infections. And these infections may be caused because of coming into the contact with the waste which is generated into the hospitals. So in India, the last speaker was talking about the legislations, a very informative one. So in India, we see that the legislation related to the hospital waste management came first in the year 1998, which is known as the Hospital Waste Management and Handling Rule 1998. And recently in the year 2016, a new rule also came which suppressed the previous rule for the management of the hospital waste. We see that the doctors are the warriors, the hospitals are saving our country. Flowers are being showered through helicopters, aeroplanes on the hospitals as they are working day and night to protect the humanity, to protect us from the deadly pandemic that is the COVID-19. Okay, so in this COVID situation, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Central Pollution Control Board also put forward certain regulations for the management of the waste. So there are certain principles related to the management of the waste, which says that the infectious waste shall be contained, and it shall not come into the contact with the non-infectious waste. Simply we see that in our society also, the people who are outlaws, who don't follow the rules of the nation, who don't follow the rules of the society, they are contained into the jails, because they are contained into the jails because they shall not come into the contact of the general public until and unless they are treated in the jails enough and then to be released. Similarly, in environment, there are certain contaminants, and those contaminants shall not come into the contact with the environment and human beings, which is part of the environment. If they will be into the contact, there will be transmission of diseases and spread of diseases. So containment is the basic philosophy for the waste management also. Containment, and after containment, their treatment, and followed by the proper disposal. So let's have an idea about it through a presentation. I hope the moderator will allow me to share this presentation with you all, which is on the COVID related thing. COVID-19 and waste management is a topic that I will talk about here. So we see that there is always a chance of infection to the workers who are collecting the waste,
from our streets, from our houses. Please unmute the mic, those whosoever, as it's giving a humming sound, please. So when we talk about the biomedical waste, the questions comes in our mind that what is a biomedical waste, from where it comes, what is the need for the management of the biomedical waste, what are the health and environmental issues, roles and responsibilities of the healthcare establishments, and legislative provisions, current practices. So the health system has major three pillars. Okay, and the three pillars complete the health system, that is treatment, diagnosis, and immunization. Okay, the diagnosis part includes the pathological centers. The diagnosis part includes the pathological centers. The treatment part includes the hospitals. Immunization part includes the development of vaccine, and dosing of vaccines to the human beings and animals are known as immunization. So all these three pillars, diagnosis, treatment, and immunization, creates different types of waste, and the waste which is solid in nature or liquid in nature generated from the diagnosis, treatment, and immunization is known as the biomedical waste, which is contagious in nature and that can cause infections to the human beings, the workers who are working into the hospitals, healthcare workers, the patients, and as well as the attendants or visitors to the hospital. If those waste are thrown outside the premises of the hospitals, then it is a gruesome condition and spread of disease is likely to happen. So during COVID times, this is important, that how the waste generated from the COVID patients during their diagnosis, during their treatment, and during their immunization, which is not at present possible because vaccine is not there, is being handled, and whether our system is capable enough to handle these things. I have tried to bring all these issues in front of the general audience so as to make them aware about the management of the waste that may be generated from the hospitals. So you see different types of surgical things, or from the wards the waste is generated. Various parts of the hospitals, various segments of the hospitals are there, from where the waste is being generated. You can see into the pictures, there is blood banks, pathological laboratories where the microorganisms are grown on the slides. The microorganisms are grown on the various types of media to learn that what type of microbes are infecting and causing the diseases. So after diagnosis part is over, these type of waste shall be disposed of properly, handled properly, so as to contain the infections that may be caused because of the waste. Okay. So we see that the poor and unscientific handling of the waste causes problems to the health and the environment. Whenever we go to the hospital, such kind of situations are seen. Because why it is seen? Because we are negligent to it. We don't ask anybody that what is happening here. We feel that it's okay, it happens, and there is no rule for that. No one raises any question. That's why I tried to bring this thing in front of the audience, so that whenever next time they go to the hospital, they must raise certain query if they see that the waste is not being handled properly, because these waste are sources of infections, may cause diseases. And during COVID times, this situation is more and more is an alert. And if the COVID type of waste will be thrown on the streets, on the municipal in the municipal bins, then what will happen? Because we see that the coronavirus can grow and can stay at various types of surfaces for longer durations. So if the COVID infected PPE kits, masks, the diagnosis swabs,
The diapers being used by the patients will be thrown into the waste bins of the community. The community waste bins will be infected. The community waste bins are coming into the contact with several types of animals, dogs, cows. They may be infected, and the infection will spread beyond the control of the human beings, what we are trying to do. See that various types of catheters, HIV positive bags are the part of the biomedical waste. And mingling those biomedical waste with the municipal solid waste is a crime. Mixing it will increase the quantum of infectious waste, leading to various types of hazard and infections. So the principle is that we need to contain. We need to contain, we need to treat. And for that purposes, training and awareness of the staff and general public is also required. As the previous speaker was telling that in the year 1972, during the Stockholm conference, on the opening day on 5th June, it was decided that from the coming years, the World Environment Day will be celebrated with different themes. The purpose of the World Environment Day is to make people aware so that their decisions shall be environment conscious. And decisions are based upon the informations. When we go to buy some product like a shirt, if I'm going to buy a shirt, I collect informations to take decision whether to buy a shirt or not. What is the price of the shirt? The texture, what is the color of the shirt. So all these informations make me able to take decision whether to buy or not. So when the people will be well informed about the environment, their decisions will be in favor of the environment. That's why it's important to proliferate the ideas and knowledges about the management of the waste, air pollution. Like Deepak sir was telling about the environmental economics and the value of the environment, value of the Chilika Lake, important things. People must learn those things so as to make their decisions more environment friendly. So there are various persons who are at risk because of improper management of the waste: doctors, nurses, healthcare auxiliary staffs, low-paid workers, the ward boys. We see in Mumbai, there are situations that ward boys are not coming because COVID patients are there. They fear that they will get infection. Hospital management personnel, patient. No, at present, nobody wish to see in hospitals. It is tough time. Okay. And because we know that there is chance of infection. Patients in healthcare establishment or patients who are living in the home, visitors to the healthcare establishment, workers in the hospital waste disposal facility, ambulance staff, laundry staff, general public, rack pickers, all those will be at the risk if the waste will not be handled properly during the COVID times. It is important that the warriors are doctors. The doctors are taking care of the patients, but the second line of defense are the hospital administration, the administration and the part of the administration which are working for the collection, treatment, and disposal of the waste which is being generated during the COVID times. So they are also the warriors, not only the doctors and nurses, but those workers who are working day and night for the management of the waste are also warriors and shall be respected. We feel that the time is being changed. The Safai Kamcharis are being respected because they are making our society clean. And that's why it's our responsibility to does not throw the waste here and there. Mahatma Gandhi said that it's not good that one human being is throwing the waste and other human being is collecting the waste being thrown by one. Where we are living in such a society where we feel that we are privileged enough and some are underprivileged, so just to collect our waste. No, this is not we are in the phase of equality. People should be equal, and the garbage of one is being rack picked by others is not an indicator of development. It shall be eradicated,
and one must ponder on it, that these situations shall not be seen into our society. You see, a small kid which has a playful time. It's not an age, tender age. This is a tender age, and in this tender age, this fellow is collecting rags. You see, in his hand, gloves are there. He's collecting globes, infectious globes, and infectious globes will be used, maybe used by others. Okay, by just washing in the village area. So these kids must have their rights to get proper education. Okay, and they shall not be thought that they are just to collect the waste being generated by the other person. So coming to the a point, how to collect those waste, what are the guidelines? So basically 4 types of color codings has been generated: yellow, red, white, and blue. And this yellow includes all those waste which are anatomical, which are infectious, amputated organs, blood, body fluids, microbiology, and biotechnological waste are collected into the yellow containers, and these shall be incinerated. The meaning of incineration is burning it in the presence of oxygen at higher temperature enough so as to destroy all the possible sources of infection, and all are dead. There is no substratum for the growth of the microorganisms. The red includes the tubings, bottles, intravenous tubes, catheters, urine bags, syringes, and shall be autoclaved. They shall be treated, autoclaved, or shredding so as to make it small, and then disinfected with the help of 5% hypochlorite solution. White is for waste sharps, needles, and it shall be autoclaved and shredding. And blue is for glassware. General cardboard boxes can be used for the purpose of the autoclaving. Now, you should see the spread of COVID. We all are aware already. We enjoyed a lockdown of 68 days in our country, and everybody is now almost aware that what is happening. The infected person cough, sneezes, and the droplets are spread. These droplets come on the surfaces, or they come into the direct contact or in indirect contact to the individuals. They are airborne. They also come to the individuals through surfaces and contaminations. So it means that the mask that we wear, the person who is infected is wearing a mask. So how to dispose of the mask is also an important issue that shall be understood. Okay, so the COVID infected patients, the doctors who are using the PPE kits, who are using the mask, how these will be disinfected, collected, and thrown are important things to be understood by all. So the government of India generated a guideline on in March, and in April, the third guideline in April again came, and which says that how the waste shall be managed into the isolation wards and into the quarantine centers where the infected people or potential infected people are kept. So it says that separate color coding bins shall be installed into the quarantine centers, into the isolation wards, and the bins shall be leak proof. There shall not be any leakage. All the bins shall be labeled as COVID-19 bins labeled as COVID-19. Records shall be kept that what type of waste, what amount of waste are being generated from which quarantine center and isolation wards, so that they can be traced properly. Like we track the patients, one patient is infected, and we track others that from where the infection came. Similarly, tracking of waste is also important so as to understand that what is the place from where the infection has originated. So record keeping is important. Even the person who is wearing a diaper, the COVID patient wearing a diaper, how it shall be disposed of. So this shall be collected into the yellow packets and then disposed of by burning it into the high temperature in controlled conditions in an
incineration or deep burial. If bedpan is being used, then they shall be properly disinfected. So the thing is that we are not capable enough. Our health systems, we are not capable enough, not knowing how to dispose of the general waste being generated at present. And meanwhile, this pandemic came, give a big jolt to the society, give a big jolt to the human civilization, make them aware that what you are doing, what is all happening, and what we were doing for the past thousands and thousands of the year. Now things shall be changed. There are PPE kits, and the PPE kits shall be collected into the red category bag. The masks shall be collected into the yellow bags and then disinfected for the into the autoclaves. There are challenges related to the management of the wastewater around the globe. It is being worked also, that how the wastewater shall be collected, and even across the world, it is difficult to trace and test everybody to know whether they are COVID patients or not. So now a new technique is being developed, that from a locality, the wastewater samples can be taken, and the wastewater sample will be tested for the COVID. If it says that it says that the sample contains the coronavirus, then we can say that this locality may have certain cases of COVID. Or if the sample does not contain any coronavirus, then we'll be sure that the big locality of people living around 1 lakh, 2 lakh people are no one of that are infected with the coronavirus can be said. The research is going on this track also. So the wastewater is also a big challenge, how to dispose it off into the isolation wards. So terminal sewage treatment plant and with disinfection facility shall be made available with all the hospitals. Like in Bihar, we see that in Patna itself, where I am living, 3 big hospitals, NMCH, IGIMS, and AIMS Patna is dealing with the COVID patients. So the hospitals which are dealing with the COVID patients shall treat the wastewater properly before leaving it into the municipal drains, because it may further cause the infections to the other persons. Also, utilization of the wastewater in utilities within the facility shall be avoided. It shall not be carried out for the wastewater when it comes. There are challenges also for the urban local bodies, because urban local bodies are not fully equipped to take care of the COVID type of waste. So the urban local bodies shall be aware of all the quarantine centers where the patients, where the potential patients are kept, and the quarantine centers shall have a regular communication for lifting of the waste from the urban local bodies. The waste shall be collected in the color coding bins and shall be handed over to the common biomedical waste treatment facilities. The PPE kits shall be collected properly and disposed of properly into the incineration systems. Prashant, sir. Yeah, I'm going to finish it now. Okay. So there are certain do's and don'ts that come into the picture after the post-COVID. Proper collection in the segregated bins, the hospital waste proper. These are the segregated bins, how they shall be collected. Nowadays, disinfection of the needles are important. Immediate actions to be taken is to record keeping and properly movement of the waste in the hospitals so as to minimize the infections. And a problem well defined, I think, will be the half solved. And this is what I would like to present in front of you. Thanks a lot. I'm going to take it over. Okay, thank you. Thank you so much, Prashant, sir. Your presentation was very informative. Now I would like to call Dr. Pintu Kumar, Assistant Professor, Department of Geography, Magadh University, Bodh Gaya. He will be talking on case studies related to environment during COVID-19 times. Pintu, sir, you're welcome. Thank you. Thank you. My voice is audible for all? Yes, sir, it's audible.
Okay, thank you. Because I forgot my headphones, so now I'm just talking a free. Before talking this topic, I'm very thankful to the organizer and his team because he has invited to me to talk and give my and deliver my lecture on this topic. As far as I'm concerned about this topic, this is very new phenomena, but I would like to share some of the factual information as it be. I'm not very well scholars and I've not done a specific research on the COVID-19. But being geographers, I have tried to inculcate some of the point through the various reported news and some of my experiences. I would like to also share some that my personal information that before joining this university, I have completed my all higher education from graduation to PhD from BSc. और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दरमियान में हम लोग के ऐसे डिबेट संस्था चलते थे जिसमें डॉक्टर नवनीत राय हम लोग मिलकर बहुत से ऐसे रिलेवेंट टॉपिक पर चर्चा की। हमारे स्टडी के पार्ट में जो भी था हम लोग डिस्कस करते थे, पर उसके बावजूद हमने एक संस्था बनाया था सृष्टि संरक्षण, और उस संस्था के अंतर्गत हम लोग बहुत से ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच में कुछ काम किया करते थे and we just try to correlate it with our theoretical knowledge to the practical aspects. और उस पर्सपेक्टिव में हमें जो भी जानकारी मिला, we have shared it on the international platform in the Italy. So that's why if we are just talking about the corona, it would have to be just highlight some of the points regarding to the Italy. 2015 जुलाई में पेरिस एग्रीमेंट पर बात हो रही थी, 2016 में उसको आना था। हम लोग दुनिया के 100 स्कॉलर्स को इनवाइट किए गए थे, यंग इन्वायरमेंटलिस्ट अक्रॉस द ग्लोब. It was one of the important conference that is being organized by the United Nations to highlight some of the specific theme and such what they जो भी है वो हमारे बीच में एक यंग इन्वायरमेंटलिस्ट क्या सोचते हैं उस पर एक मुद्दा था. We have just come on one of the umbrella that was name of many faith but one earth many faith. तो हम लोगों ने उसको डिस्कशंस किया and we have just tried to see and visit the Italy with directly to some of the experiences. Now corona या COVID-19 की हम बात कर रहे हैं. Of course it is very severe problem and such a invisible enemy has no any authenticity to how do we have to combat these challenges all over the world. तो कोई भी चीज ये दुनिया में है इसके बारे में हम लोगों को क्या, बट इतना जरूर है कि जो भी एक इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव में कोविड-19 की बात आई तो एक बार दुनिया में इस बात को रियलाइज हुआ कि हमें इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम के प्रति सोचना होगा. दुनिया के मार्केट्स ने अपने ग्लोबल एंड मार्केट को छोड़कर लोकल मार्केट को प्रमोट करने की कोशिश करने लगा. तीसरी चीज उसमें जो सामने आई कि हमें जो इकोसिस्टम्स है, जो हमारे इन्वायरमेंट है, वी थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, जो पहले से हम लोग थ्योरेटिकली जानते थे, बट इट्स नॉट ए वे टू ओनली जस्ट टॉक इन द वे टू थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल. वी हैव टू गिव सम रिजल्ट ऑल्सो. यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने अभी 2-3 दिन पहले कोविड-19 पर कॉन्फ्रेंस पर एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि वी हैव ए framework for the action on the climate change and environment. We have to give and combat such a challenges. Firstly, the 2030 agenda for the sustainable development and Paris agreement on the climate change is a better way to combat such a climate changes. Another thing, this is the sum of the theoretical and legal perspective and some of the environmental perspective. Many laws are always being prepared, but हम लोग जानते हैं कि 1972 जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद से इस देश में ही दुनिया में ही नहीं हर लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इवन माइक्रो लेवल पर बहुत से कार्यक्रम हुए, पर जैसे जैसे हमारे चुनौतियां बढ़ते गए वैसे वैसे हम उन समस्याओं के साथ लड़ते गए. अभी एक अमेरिका की एक पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लेबोरेटरी में रिसर्च हुआ और इसमें एक बहुत बड़ा एक नया रिसर्च सामने साबित हुआ. वो रिसर्च ये था, मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ जस्ट
coming on this point because my topic is generally the COVID-19 and environmental case studies. So it और जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव में हम क्या देखते हैं, आई वुड लाइक टू हाईलाइट सम ऑफ द पॉइंट। तो अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लेबोरेटरी के रिसर्च में ये बात सामने आई और दिया गया कि जो न्यू डिफॉरेस्टेशन या जितने हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अभी तक हमें पता, अगर देखें आज के एक न्यूज़पेपर में भी एडिटोरियल दिया था कि 68% हम लोगों ने पूरे तरीके से अगर हम देखें ध्यान दें तो 68% हमारा पौधों को ये जो जंगलों को हम लोगों ने नष्ट किया है। प्रति हम 4 मिनट पर एक स्पीसीज हमारे बीच से डिसअपियर हो रहे हैं, पर मिनट 10 ट्री को काटे जा रहे हैं। ऑफ कोर्स की प्लांटेशन भी हो रहे हैं। 33% कोरल रीफ को नष्ट किया जा चुका है। 10% जितने भी हमारे जो स्पीसीज हैं कि जो जितने मतलब स्पीसीज स्पेशली फॉर द जितने इंसेक्ट्स स्पीसीज हैं वो 10%, 41% जो भैचर प्लांट प्रजातियां होते हैं, और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो विलुप्त हुआ है। उसका प्रभाव अब दुनिया एक जानने कोरोना वायरस ने उसके सामने एक नई चुनौती के रूप में पेश करने लगा। 90% हमारे जो फसल्स की जितने भी स्पीसीज हैं, जो ग्रेन्स फूड ग्रेन्स स्पीसीज हैं, वो भी विलुप्त हुआ है, खत्म हुआ है। विगत 300 सालों में हमने क्या पाया है कि जो हमारे वेटलैंड एक रिच बायोडाइवर्सिटी है, हमारे बायोडाइवर्सिटी अगर क्लाइमेट चेंज को करना था हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम लोग कैसे कंट्रोल करें और दूसरा बायोडाइवर्सिटी को हम लोग मेंटेन करें। वेटलैंड जो हमारे विगत इन अगर हम इधर की बात करें तो हमारे 15% जो वेटलैंड है, विगत 300 वर्षों में हमने दुनिया का 15% वेटलैंड को खो दिया। वेटलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द मेंटेन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन ऑल। उसके बाद अगर हम विगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की बात करें, जैसे कहते हैं कि ओशियंस जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है और इसलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए ओशियंस को, लेकिन हमने इतना पॉल्यूट किया है कि हमारे समुद्र में भी we are not just talking about only the environmental loss on the place and space either on in the forest and something, but I am just talking about also the forest। और हम लोगों ने 400 डेड जोन बना चुके हैं। डेड जोन में देयर इज नो लाइफ इन दैट ओशन। ये एक डेटा है, ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ अगर हम बात करें तो अभी कुछ रिपोर्ट्स को हम चर्चा करते हैं। ये हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में क्या है और क्या देखते हैं, और कोविड-19 के ऊपर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, दुनिया इस बात को जानना चाहता है, ये देखना चाहता है हाउ डू वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर इन अ सस्टेनेबल मैनर। ऐसा नहीं कि कोविड-19 आज पहली बार ऐसा समस्या लेकर आया है, इससे भी पहले बहुत से प्रॉब्लम्स आए हैं और आए हैं तो दुनिया भर में बहुत बड़ा मैसेज दिया। तो अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लेबोरेटरी के रिसर्च ने पाया है दुनिया भर के जो भी फॉरेस्ट पुराने फॉरेस्ट है उसकी तुलना में जो न्यू फॉरेस्ट डेवलप हो रहे हैं, उस फॉरेस्ट के जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की जो ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है वो पुराने फॉरेस्ट की तुलना में कम है। इट मीन्स दैट इसका वजह क्या है, कारण भी ढूंढने का कि अगर एक पेड़ विलुप्त हो रहा है तो दूसरे पेड़ को कैसे, और वो बायोडाइवर्सिटीज को भी प्रोटेक्ट नहीं करता। ये बड़ा ही एक हाईलाइटेड एक रिसर्च सामने आया। इस रिसर्च के थ्रू हम ये जानना चाहते हैं, हम लोग तो अब तक यही जानते हैं कि भाई पेड़, एक कटा पेड़ लगा दो, हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो वी हैव टू रिप्लांट एट द प्लेस ऑफ डिफॉरेस्टेड लैंड, या जो हम लोग पेड़ को काट। बट इसने कहा कि जो पुराने फॉरेस्ट थे उनको जैसे नए फॉरेस्ट में चेंज, वो चुनौतियां पहला है कि बायोडाइवर्सिटीज को हम उस वे में मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटीज है वो पुराने फॉरेस्ट में ज्यादा होता था एज कंपेयर टू जो न्यू प्लांटेशन। इसका कारण दो बताया। कारण दो ये था कि पहला कारण ये है कि जो आज के लेवल में जो हमारा क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर बढ़ा है और लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ा है, इसमें पेड़ों के जो स्पैन है, लाइफ स्पैन है और हाइट है, और उसकी जो एक तरह से उम्र है, डेंसिटी है, स्पीसीज है, बहुत से ऐसे विलुप्त हुए हैं या उसके साइज में रूपांतरण हुआ है, छोटा हुआ है। उसकी जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ वे में
कुछ उस पर इम्पैक्ट पड़ा। अभी हम लोग ये जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे जो प्रोडक्शंस में अगर पैडी कल्टीवेशन है तो 10% की कमी हो जाता है, वीट कल्टीवेशन में 5% की कमी, उसी हेक्टेयर में जितना प्रोडक्शन हम करते हैं उतना कम। तो ऑफ कोर्स कि इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है कि स्पीसीज ऑफ प्लांट जो है वो जनरली वो उस वे में हम नहीं समझ। दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे रिसर्च हो रहे हैं, हर प्लांट्स की अपनी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होती है। जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि कोरोना वायरस पहले चमगादड़ से फैला, फिर उसके बाद पैगोलिन नामक जीव आया, उस पर चर्चा हुआ, ये बहुत स्पीसीज है, इसको बहुत विलुप्त होने लगा दुनिया भर में। फिर उसके बाद तीसरा ये चर्चा हुआ कि हमें हर तरह का मीट बैन्स कर देना चाहिए। ऑफ कोर्स ये अभी तक कोई रिसर्च नहीं है, इसलिए हम किसी बात को कह भी नहीं सकते हैं। और रिसर्च इस पर जब यूनाइटेड नेशंस भी हमारे सामने, जब जनरल सेक्रेटरी और WHO के जो हेड हैं वो भी कह रहे हैं कि वी हैव नो एनी प्रॉपर एंड ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन टू कम्बैट दिस चैलेंज। दूसरी चीजें हैं कि सबसे पहले अगर कोई रिसर्च में बात सामने आएगी तो वह मेडिसिन। तभी कोई रिसर्च के बाद कोई रिस्क लेकर इस पर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन के साथ इस पर फाइंडिंग आएगी। क्योंकि हर व्यक्ति एक ऊपरी परत से स्टडी कर रहा है, बट डीप में इसलिए नहीं जाना चाहता है कि हो सकता है कि उसे अपनी लाइफ को सब कुछ नहीं। तो जब तक उनका प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं आएगा, ट्रीटमेंट नहीं आएगा, तब तक इस पर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ कोविड-19 का क्या प्रभाव था, कैसे आया, ये बताना मुश्किल। इसलिए जब तक मेडिसिन ना हो, ये बड़ा एक तरह का विचित्र कहना। नेचर में भी, मैं द हिंदू में पढ़ रहा था, नेचर में भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, तो इस पर एक सवाल उठता है। तीसरा, इन्वायरमेंटल में जो बात आई, जो हमारे सामने स्पीसीज डिसअपियर हो रहे हैं, ठीक है, अगर ये चमगादड़ की बात करते हैं या पैगोलिन की बात करते हैं या और भी कोई स्पीसीज की बात करते हैं या बायोलैब से डेवलप हुआ, पर ये बात तो जरूर है कि दुनिया का दूसरा जो स्टडी हुआ, जो यहाँ से स्टडी किया गया, इस स्टडी में ये पाया गया है दुनिया भर के जो क्लाइमेट, जर्मनी के मार्टिन लूथर किंग यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर यंगो नागिन के नेतृत्व में एक रिसर्च टीम किया, और रिसर्च टीम ने 66 सैंपल्स लिए इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी इलाकों में, और उसमें ये पाया कि जहां पर ज्यादा कोरोना से जो मौत हुई, ये रिपोर्ट अप्रैल में आया था, उसमें सबसे ज्यादा जो मौत हुई वो एयर पोल्यूशन जिन क्षेत्रों में ज्यादा थी वहां मौत। इट मीन्स कि कोरोना वायरस का कहीं न कहीं संबंध रिस्पिरेटरी सिस्टम से। अगर मैं एक ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में देखूं तो अभी तक हमारे पास भी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हमने रिसर्च किया, पर बहुत से डेटा एनालिसिस करने के बाद बहुत सी चीजें, तो हम 2-3 पॉइंट पर हम अपना एक निष्कर्ष दे सकते हैं एज स्कॉलर्स। पहला ये कि इसका डायरेक्ट संबंध है, मेडिकल साइंस भी कहते हैं कि जिसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है वो बहुत सफलता पा रहा है। और कोरोना वायरस है, ये सभी लोग जानते हैं। भारत का रेशियो देखें तो 4.99% के आसपास मृत्यु दर, विश्व के और देशों की तुलना में हमारे यहाँ कम। कल तक की रिपोर्ट के हिसाब से 6075 लोग 4 जून तक में डेथ किए हैं। तो इस प्रकार 4.5 के आसपास हमारे यहाँ मृत्यु दर। बहुत तरह के सवाल है जरूर कि इसका संबंध जरूर है कि हमारे यहाँ इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है, पर इम्यूनिटी पावर के स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ यहाँ का क्लाइमेट बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इम्पैक्ट करता है। कि कोई भी बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इंडिया में अगर थोड़ा सा मेडिकल, अभी तक जो रिपोर्ट है मैं भी बहुत ऑथेंटिक इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ टेस्टिंग की प्रोसेस जो है वो बहुत रिलायबल इस तरीके से नहीं हो रहा है। और जिस तरीके से अभी जो अनलॉक हुआ है और तेजी से बढ़ रहा है, पहले हमारे पास कोरोना के केसेस कम थे और हम बहुत डरते ज्यादा थे, एक मैट्रिक्स में दिखाया गया। अब कोरोना की केसेस ज्यादा है लेकिन लोग डर कम रहे हैं और बाहर बहुत लोग। तो इस संदर्भ में कितना बढ़ रहा है अभी तक एग्जैक्ट, तो इसमें ये बात सामने आता है, स्पष्ट आता है कि हमारे क्लाइमेट का प्रभाव हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर है। इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब है कि हम लोग बहुत एडवर्स कंडीशंस में भी
हम लोग अपने आप को बहुत से क्षेत्र में एडजस्ट करते हैं। और इससे ज्यादा है कि भारतीय जो भोजन में हमारे बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो फॉरेनर में, विदेशों में नहीं। आप लोग आयुर्वेद या इस पर जो आरोग्य है इस सब पर कंटिन्यू इंफॉर्मेशन आ रहे हैं और वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग। तो ये भारत के लिए एक कारण हो सकता है कि इस कारण हमारे यहाँ रेट कम, पर हमारे साइंटिफिक लेवल पर रिसर्च और जो हमारे ऊपर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट उसके लेवल पर हम कितना अभी तक अपने लेवल पर सक्सेस हो पाएंगे, इसका रिपोर्ट न तो ICMR दे पा रहे हैं सही से, जो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के हेड है, और ना कोई और दे पा रहा है। IIT दिल्ली और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट है जो अप्रैल में 1 महीने के लॉकडाउन के दरमियान में पाया गया। उसमें देश के 115 शहरों में से बताया कि 92 शहर की हवा जो है मानक का स्तर से अच्छी थी। ये ऐसा नहीं था, ऐसे इससे पहले 50 शहर के मानक स्तर से अच्छे थे, लेकिन 92 शहरों की ये मानक स्तर बिल्कुल अच्छा हुआ और उसमें सबसे बेहतर रिजल्ट जो है 43 या 45% के साथ में दिल्ली का है, जहां, और ये रिपोर्ट है 16 मार्च से 15 अप्रैल 2020। तो ऑफ कोर्स कि कोरोना का डर जहां जिस तरीके से इंसान को जीवन के लिए है प्रभावित किया, पहला रिपोर्ट में जो मैं बताया कि मार्टिन लूथर किंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आगिन के अनुसार ने कहा कि वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है जहाँ पर एयर पोल्यूशन। तो अगर दिल्ली जैसे शहर या हमारे जैसे शहरों में एयर पोल्यूशन की मात्रा कम आती है तो ऑफ कोर्स कि कोविड-19 के बीच में हमारा एक कदम और सफलता की राह पर हम बढ़ रहे हैं। ये रिपोर्ट हमें इस बात को भी सोचने के लिए बाध्य करता है कि अगर हमें जितना साइंटिफिक तरीके से कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए सोचना पड़ेगा, उतना ही हमें इन्वायरमेंटल प्रोसेस से हमें उसके लिए प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि सिर्फ लॉकडाउन की वजह से भारत में प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, बहुत कम केसेस आया, अब बढ़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो हो सकता है, पर उस लॉकडाउन की वजह से जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट में चेंजेस आया, इसका भी एक इम्पैक्ट भारत पर पड़ेगा। इसका रिपोर्ट के आधार पर हम जरूर कह सकते हैं कि हमारे बीच में एयर पॉल्यूशन कम हुआ, उसका प्रभाव पड़ेगा, वॉइस पॉल्यूशन कम हुए, उसका प्रभाव पड़ेगा। और इस रिपोर्ट का वजह के आधार पर ये बातें किया जाता है। Pintu sir, हाँ, यस, sir, sorry to interrupt, but sir, we are in short of time, so if you could conclude, would be better. okay, now I'm concluding that. Because we are having a question. Okay, 1 minute. Just I have 1 minute time. Yes, sir, sure. Sir. NASA. Okay, I'm just concluding my lecture. NASA की एक सैटेलाइट तस्वीर के आधार पर एक रिपोर्ट जारी किया गया था। उस रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 20 सालों का जो एरोसोल की मात्रा है वो बहुत कम पाई गई, और ये एरोसोल की जो हमारे हैं इंडिया के लिए एक बहुत बेहतर कारण है, क्योंकि इंडिया में दिल का और श्वास का मरीज बहुत ज्यादा है, और एरोसोल की मात्रा कम होने से इसका सीधे संबंध हमारे हेल्थ के दिल और फेफड़े पर होता है, उससे हमारा एक फेवर हो सकता है। तो अगर वी आर जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड, फाइनली जो हमारा कंक्लूजन है कि अपना, मैंने इटली को बहुत करीब से देखा, बहुत से लोगों ने कहा, मैं रहा हूँ वहाँ 10-15 दिन, बहुत से शहरों, सिर्फ वेनिस और रोम ही नहीं, आसपास के कुछ शहरों में भी घुमा, देखा, लोग कहते थे कि इटली में बिल्ड फर्स्ट क्लास हेल्थ ऑफ कोर्स है, लेकिन सोशल कनेक्टिविटी और रिलीजियस स्ट्रक्चर भारत से कम नहीं है। लोग कहते हैं वहां तो जब इतना लोग दूर रहते हैं, ये है, तो भारत में तो और बड़ा, ऐसा नहीं है, वहां भी लोग बहुत जुड़ते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पर हाँ, लास्टली जो ये वर्ड है द हिंदू में, नेचर में, पेपर में आया कि इसका एक ही कारण है जो कोरोना का फैलने का, कोई बहुत ज्यादा बॉडी स्पर्श से नहीं, इसका डायरेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। और जब तक हमें, इसलिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके से हो कि किसी भी तरह का जो इन्फेक्टेड वायु है, एयर है, वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं, इसीलिए इसकी प्रोटेक्ट करना, ये इतना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपके शरीर में कोई टच कर रहा है तो तुरंत आपको जब भी बाहर से जाए तो संदेह जरूर रखें कि कोई ना कोई व्यक्ति हमसे कोरोना से जरूर टच किया होगा,
आप अपने को सैनिटाइज कर लें, डिटॉल डाले पानी में, स्नान कर लें। एनीवे, फाइनली हम एक जो है, मैं यही आई एम जस्ट कंक्लूडिंग माय लेक्चर्स। मैं अपना व्यूज तो कुछ देना नहीं चाहता हूँ, अब टाइम नहीं है। रिपोर्ट के आधार पर अगर आप लोग उसको देखेंगे तो हमें 1 घंटे का लेक्चर को 10 मिनट में समराइज करना है। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। Thank you so much, Pintu sir. Your session was very informative. Now this is the question session. So there are a few questions which came in the chat box. I'll be saying the questions. The first question is, how can we recover our environment after COVID-19? Any suggestions? You please also you just name the panelist who will reply to this answer. It would be better for us. We all panelists will try to that. Okay, sir. Deepak sir, if you would like to answer this question. So you are mute. We can't hear you. What is the question actually? So the question is, how can we recover our environment after COVID-19? Yeah, recovering it's a very complex question. When we look back 60 days back and 60 days back again, it's a very temporary phase. People are expecting that whatever recovery and whatever rejuvenation and whatever the earth is healing or breathing, this kind of sentiments are very emotional, very touchy. But this is very temporary phase. Whatever we could have at the policy level, at the people level, at the community level, and at global level. This is very significant. When we are in era of 2030, when we are talking about sustainable development goals, we are working on 17 sustainable development goals on 5 pillars: the people, the planet, prosperity, peace, and partnership. And these 17 goals are very relevant for not only 2015 to 30, but even onwards. And second one is the Paris Climate Agreement we are talking about. How to reduce the carbon footprint, how to reduce the carbon dioxide emissions. And even our government was very much considering that they are going to reduce 33 to 35% of the carbon dioxide emission from 2015 to 2030, according to GDP and on line 2005. So whatever the governments are taking, it's depend on the policy and the people as well. We have learned very important lesson from the COVID, that we can again survive, we can live with a minimum need. So what is that minimum need? Minimum need is your simple life, sustainable life, and control your consumption. This is very vital part of learning, is to control your consumption. Connect your child with the environment, connect your child with the nature. The basic thing what we have to talk over here is policy part is the government part. But whatever the responsibility we have to accommodate is on self, that we have to protect the plants, we have to save the water. It's not particularly in your book. Bring it in action and control your consumption. Thank you, sir. Live a very simple life. Yes, this is very basic. Yes. So thank you for the answer, sir. Actually, we are in I would like to add some. Very short of time. I would like to add some point. Sir, actually, we are very short of time and this session will expire. So I guess we will continue some other day. I would just like to thank everyone on behalf of GreenJustice Network Foundation. Thank you so much for all the resource person today. It was a wonderful session. We learned a lot. Thank you for sharing your experience and knowledge.
Thank you to all the viewers for making this webinar a great success. Thank you one and all. And I would just like all the participants and all the viewers to send your questions in the feedback and also fill the feedback form. We will make sure that all your questions are answered. Thank you one and all. Okay. Thank you. We had a great time. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you. Thank you, madam.